सर अगला सवाल ये है कि लोगों को बहुत सारी जाहिर है जो बंदा जिस प्रोफेशन में होता है वो चाहता है ये है, ये जनरलाइज बातें तो आप सुनते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि उसके प्रोफेशन का नाम लेके बताया जाए तो उनको बेहतर समझ में आता है। कुछ क्वेश्चन आए हैं जो कि बिजनेस और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के हैं। अच्छा ठीक है, बिजनेस और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ओके, इनके बाद डिग्रीज हैं क्या कि है? हम कहाँ रहेंगे। जाहिर है मोस्ट ऑफ देम आर एमबीएस। ओ, और एमबीएस, ओके। ओके, मैं एक आई मीन लेट्स यूज, देखें, what I'm going to use is I'm going to use this as an opportunity because majority of here who are sitting here, they are either uh, South Asians or Asians or Pacific Asians or people who are not in the West, okay, or maybe sitting in the West but they don't have the jobs, right? So I'm going to ask this question जो आपने मुझसे बोला है अभी, and I'm just going to basically ask this question from the from the chat GPT कि भाई क्या होगा, इसका क्या फायदा है ना। सो मैंने ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है। आई एम ए बिजनेस एंड मार्केटिंग डिग्री होल्डर्स, ठीक है ना, होल्डर, और एमबीए, ठीक है, जल्दी जल्दी किया है तो। सो व्हाई शुड आई स्टडी डिप्लोमा इन एआई ऑप्स which comes with cybersecurity, offensive security, DevOps, SysOps, generalized AI, and generative AI, all combined together into one comprehensive course, which is recognized by EduQual UK and at RQF Level 6 of the course comes with hands-on labs, फलाना फलाना, ये वो सब कुछ, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यूएसए में और इन जनरल इन नेटो कंट्रीज, यूएसए, ठीक है ना, कनाडा, ठीक है ना, और इन जनरल यहीं पर, क्योंकि सब लोगों की डेस्टिनेशन यही होती है कि वो यहाँ आने की कोशिश करें। सो लेट्स सी उसका जवाब क्या आता है। सो परसुइंग अ डिप्लोमा इन एआई दैट encompasses all of these things presents a unique opportunity to enhance your skills and open up new career paths. When you already hold a business and marketing degree or MBA, here's why. Broadened skill set, in demand expertise बहुत ज्यादा है। आप दुनिया की किसी चीज में चले जाओ, उसमें आपको वो मिलेगा, ठीक है ना। वर्सेटाइल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनहांस जॉब सिक्योरिटी, लीडरशिप रोल्स तुमको मिल जाएंगे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी प्रॉस्पेक्ट्स तुम्हारे खुल जाएंगे, ग्लोबल डिमांड है टैलेंटेड की। बट इट्स नॉट थ्रू द डिग्री। अनफॉर्चुनेटली जो डिग्री है वो एक रास्ता बन जाता है, इट्स अ कांडुएट कि वो आपको यहाँ अपने मुल्क से बाहर लेके जा सके। तो अगर तुम पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, wherever you are in whatever country you are, if you want to go and work in the European Union or in the Middle East at high paying jobs, then you need to find basically the striking balance, right? You don't have to ask me the question. It will tell you, you ask the question with the AI, because this AI has access to 70 billion tokens of information, right? It's a similar system that we're using. We call our system Albari, right? Our AI is Albari. I can't demonstrate this over here. That's not because that doesn't have any, there's a lot of things going on in our company. So that thing जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स का डेटा वगैरह सब एनालाइज कर रही है, सब कुछ। इट्स अ बिग थिंग, राइट? बट दिस इज अ कमर्शियली अवेलेबल फॉर ऑल द जो ना लोग, तो लोग इससे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछेंगे, आई एम ए बिजनेस प्रोफेशनल, व्हाई शुड आई स्टडी दिस कोर्स, ठीक है ना, दिस इज द कोर्स, बट यू नीड टू आंसर, आस्क द राइट क्वेश्चन। तो देखो मैंने सवाल कैसे लिखा। अगर तुमसे पूछो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं बताएगा। मैं अकाउंटिंग में हूँ, मैं बताएगा। सो इट विल टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, but you need to understand what kind of question you're asking, because if you don't ask the right question, it won't be able to give you the right answer. This is the only limitation of AI right now, because it is not sentient, right? It can't have conversation like human beings. Okay? Will it change in the next 20, 30 years? Absolutely, yes, it will change. What will be the landscape at that time? Similar to what you have seen in the movies, it will be very, very different, right? If the world doesn't blow up and things doesn't go sideways and there is no other nuclear war happening, then who knows what will happen, right? But things will go south, I'm sure about this, because of various prophecies and whatever the case is. And you will see things going in the wrong direction. But for now, it will take time, because you have the opportunity, तुम सब लोगों के पास opportunity है कि तुम लोग बाहर निकलो और बैठ के काम करो। So अगर तुमने chemical engineer हो, mechanical engineer हो, accountancy में हो, you have all the opportunities in the world
and we will assist you. We will assist you to place you on these opportunities. हमारा जो Al-Razzaq program है, that ensures that you are placed in the right employment, right? And that's what we do. So अगर ये Taha पहले आता, if he would have come to us earlier on, and he had the time, even if he had 6 months, we would have done something for him. And we would have, he had to complete the courses in 3 months' time, but then we would have been able to place him somewhere. Because हमारे पास ऐसे students हैं who only had 2 or 3 months in PSW left, and they've secured the job. Again, where are they right now? I'm not sure, but they were able to secure the employment and whatnot. So all of you have an opportunity, but you have to work hard. There are no easier, there is no free lunch. Aasan nahi. It's not going to be easy. You have to work hard and you have to work smart. And that's what you have to do.